invited me to visit your home state of Gujarat, and I would like to express my gratitude and express my heartfelt gratitude for this special gesture. It's a sign for the very deep ties between our two countries, but it's also a testament to the friendship towards me. Thank you very much. चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। This CEO forum, to fully tap into full potential of our economic relations, we need to conclude the negotiations on a free trade agreement between India and the European Union. We need to use this opportunity. The President of the Commission are going to travel to India toward the end of this month and are going to sign this agreement. After it's concluded, they are going to undertake more progress and to bring this free trade agreement about. Allow me to say this also against the backdrop of the decision of last Friday that the European Union concluded the Mercosur agreement finally is an encouraging sign on the path to continue down the road of forging and concluding free trade agreements. आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे पहले हमने तय किया है कि इस सीमलेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लिमिटलेस बनाया जाए, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी गहरा सहयोग होगा। डिफेंस क्षेत्र में आज हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं। इससे डिफेंस में को इनोवेशन और को प्रोडक्शन के लिए हमारी कंपनियों को स्पष्ट पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा। स्पेस सेक्टर में भी अब सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। दूसरा, हम इस बात पर भी सहमत है कि ट्रस्टेड पार्टनरशिप को अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का रूप दिया जाए। दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग और गहरा करेगी। सेमीकंडक्टर्स में हम म्यूचुअल पार्टनर्स हैं। इसके साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, फिनटेक, फार्मा, क्वांटम और साइबर ऐसे क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं।
ladies and gentlemen, I want to focus on three priorities. First, we advocate for an international order in which we can live freely and securely. Because the world order is changing. The moment we are meeting here, it is increasingly marked by great power politics and thinking in spheres of influence. Rough winds are blowing, and we have to brace ourselves against these rough winds. Russia's war of aggression against Ukraine is probably the most drastic expression of these changes and this upheaval. Together, we are going to assert these values and interests that we share in this new world together. No, we don't always agree in all matters, and that holds true for our European partners as well, but the overlaps we're seeing are very big indeed. And this is why we want to cooperate more closely in the field of security policy. We host joint exercises of our Navy and our Air Force, and we have joint port visits, military joint visits, and we have forms of consultations. And we want to deepen our defense industries and the cooperation of our defense industries, and this has strategic significance. That strengthens both, and that leads to the fact that India is less dependent on Russia. You saw it. We signed groundbreaking memoranda of declaration. One memorandum stipulates the closer cooperation of our defense industries in the field of development and production, and the promotion of innovation and strengthening global supply chains. Germany supports an ambitious and economically meaningful EU-India free trade agreement as a central pillar for stable and future-oriented economic engagement. We cannot let this chance go by. And we are pursuing more diversification by way of strengthening our supply chains, for example, in the field of critical resources. For governments, the role is clear: not to direct business decisions, that's not our way to work, but to ensure solid, reliable and favorable conditions for trade and investment, nationally, bilaterally and at the international level. In this case, between the European Union and India. Under my government, ladies and gentlemen, Germany is open for business and open for business cooperation. At the same time, we are strongly interested in further opportunities for German business in India. A second key topic is innovation. Germany and India are strong markets. We are innovation-driven economies with complementary strength in research, engineering, manufacturing and entrepreneurship. Innovation fosters growth, and our businesses are key drivers for innovation. There are significant opportunities for cooperation across industries and across technologies. Looking ahead, the full economic potential of our partnership is yet to be exploited. Unlocking it requires ambition, reliability and close cooperation between businesses and government, and a shared commitment to innovation and future-oriented business models.
भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए मैं चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त करता हूं। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच नजदीकियां और बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोथल में बनाए जा रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम जुड़ रहा है। यह दोनों देशों की मैरीटाइम हिस्ट्री को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जर्मनी के साथ करीबी सहयोग रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे MoUs से हमारा सहयोग को और अधिक बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहे हैं। हमारी दोस्ती का प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देता है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे देशों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट से हमारी ट्राइलेटरल विकास साझेदारी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल है। हम ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए अपने साझा प्रयासों को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। India is a desired partner, a partner of choice for Germany, and the preconditions for a renewed and deepened and intensified partnership couldn't be more favorable. Germany, as the most populous state and the state in the European Union, which is the most economically strong state in the European Union, and India is the biggest democracy of the world, we share fundamental values. The highly dynamic India and the highly technological Germany, we share essential interests, and this is what we build upon.